talking about it from all the perspective. We will be talking about all those things which matters the most at this point of time, and it will help you take proper decisions and going forward. So let me just share you the screen. So hope everyone is able to see the screen. So first of all, let me just see 117 participants I can see. Nityanand, Aditya Karnawat, Aman, Amol Kulkarni, Anand Sawant, Anand Mishra, Apurva Sharma, Ashish Modi, Ashok Kumar, Ashok Singh, Mr. Ashwani Pahwa, Bharat Manoja, Vidyut, Vinod, Virendra Singh, Chaitanya, Chandan, Deepak, Harish, Harshita, Jitendra, Mr. Kantaraj, Kushman Singh, Kuldeep Singh, Lalit Kumar, Loganathan, Mahadev, Maharaja, Konar, Manas, Mandar, Manish Jeff, Manem Srinivas, Manoj Patel. Please put where are you from? Please comment in the comment box what city you are from. Mukesh Patel, Mr. Chaitanya, Nagarjuna, Nikhil, Nishant, Pankaj Kamath. Thank you everyone for joining in. I cannot take everyone's names. Thank you everyone for joining in. And this matters most for me. All of you, it is a pleasure to have you here in this today's session. So, क्या लगता है markets? Where are the markets headed? We have seen. Hope you have enjoyed last full phase of bull run session and end of bull market session. And today we are taking this क्या लगता है markets and where are the markets headed? So let us go forward with the agenda. So this is the agenda for today. First, we will discuss about current state of markets. Is the bear market ending soon? So that is a $1 billion question because recently what has happened in past 2 to 3 days, markets have started stabilizing. So is it a sign of the end of a bear market? We'll talk about that. Then we'll discuss about where we are currently from a market cycle point of view. Is the recording on? Yeah, the recording is on. We'll discuss about where are we currently from the current market cycle point of view. What are the market breadth indicators and what does it say? We'll talk about Chinese bull market and how to navigate it. We'll also talk about precious metals, their miners, and what is the outlook for the next 6 to 9 months. What is commodity, where we are in this commodity bull run, where we are now, because it started last year when we discussed about it in March. Is the new bull market started for commodity stocks? We'll be discussing about that. I'll be also discussing about integrated steel manufacturer. I cannot take the name of the company, but yes, I'll discuss the entire case. So integrated steel manufacturing company trading at extremely deep valuations, and can it turn out to be a dark house? That is what we'll be discussing. I'll be also discussing about the outlook on small caps. Then I'll be discussing about building product business, which I am bullish on. So let us look forward with the market cycle first. Let us understand market from a market cycle point of view where we are today. So the question was, is the bear market ending? The answer you will get this from this presentation, which is in front of you. The cycle of market emotions. I've been talking about it in September. I said that we are here, and that is the time when the euphoria is there, and it is a period of maximum financial risk. That is what I said. And successful investors know which market cycle we are in. So at that point of time, there was a maximum financial risk. But at a later stage, we will be reaching a maximum financial opportunity. We are not yet reached. So this is not the end of the bear market. That is very clear. So we are now here, somewhere here. We are now somewhere here. After that, if you see this chart, after euphoria, there is a complacency, then there is a anxiety, then there is a denial that my investments are great companies, nothing will happen with them.
But we have seen greatest of the great companies have also fallen like 25-30% in this fall. Am I right? Greatest of the great company, good of the good companies also have fallen. So many people just few days back were denying that my companies are great and nothing will happen to them. But we have seen what has happened in just 2 months of fall from January and February. So, so that denial phase was there, and recently we entered into a panic zone. So we are in near panic zone, and we have started a small, short, very near term or very short term base. It is not a long term bear market end. So we are somewhere here. After that, the capitulation has to play out. And because what we have seen till now is a time correction, price correction. And this is called as time correction. So price correction has 80% completed, 80 to 90% completed. Now the time correction, some 10% of price correction and a long time correction it has to happen before the new base happens and we start a bull run. So understand that we have to be very, very, very patient, because next 9-10 months is going to be very difficult period in terms of small cap. Especially I'm talking more about small and mid caps. Large caps, the problem is not much there. Maybe we might not see this, maybe they might not fall, but the problem is with small caps and mid caps. So be ready, the pain is not yet over. That is what I want to say. And why I'm saying this, that we are still here and not here. In the next slides, you will get a full clarity on that. So this is the time for the new people who have joined. Let me just tell them that 5 months ago, we made a video saying we are into a last phase of bull run. And the clear commentary was, whatever you have made money in past 4 years, this is the time to protect. So these were the words, these were the key takeaways from this last phase of bull run session. 3 months before, we took one more session where we said end of bull market. 3 months before that too, at the end of October, we took this. And after that, we have seen what has happened with the markets. On 27th of September, on Conviction Club, we said people who have lot of khujli to do trading, please forgive me for the word which is I am using, but that is what was the situation then. A lot of people wanted to enter into markets into that such situation, and I clearly said people who have that affinity or khujli to do trading in this last phase, please wait for April 2025. And in April, we were going to once again reassess the situation. Whatever you touch can turn gold, but do not do any adventures now. Let us look after April 2025. These were my words. Especially newbies who don't know how to do risk management. This is not a newbie friendly market. Just stay away. Even for experienced, it is very challenging, and this has been challenging. So since September, whoever has listened to this, and we run this Conviction Club, a close members team, a paid members team where they get to learn from my experiences and all. So these were the words, and still now we have seen that what havoc has happened in the markets. Now let us go forward, and why I'm saying that we are yet to complete that entire zone and we are yet to reach there. We are only near panic zone. Over the next at least 6 months, the pain is there in small and mid caps, especially small and mid caps. Because what has happened, why I'm repeatedly talking about small and mid caps, because most of the retail investors, most of the market participants are invested heavily into small and mid caps, because very few people own large caps. And even if anyone is owning large cap, that is through mutual funds. Most of the stock retail investor is owning it small and mid caps, less than 35,000 crore market cap. Most of the people are owning that. So the important to understand, I'm repeating again, which I earlier explained also. This is the time. There are times. This is Nifty small cap 100 divided by Nifty, which means numerator is small cap, denominator is Nifty, which is large cap. So if the numerator is going, so if the ratio is going up, which means numerator is increasing compared to denominator, or
denominator is decreasing compared to numerator. That is the time when the ratio will go up. And when the ratio goes up in this case, it means that small cap is making money compared to Nifty. So just see the phase of 2004 to 2005, 6. Small caps made more outperformance compared to large caps. But it lost all that outperformance in 2008. So what happens is small cap is all about timing. If you cannot time small cap, you should not be a small cap investor. As simple as that. Because everything depends upon timing. I'm talking about from a portfolio perspective, not from a stock perspective. Stock perspective, stock specific valuation. If you get something good, it might be you might still make money even in a falling market. That is different. But what I'm saying is, if you are holding a portfolio of a small cap stocks, it is important for you to understand every time whatever extra returns are generated by small caps, all has been given up in the bear market. And just see, this is the time when it bottoms out, and this is the time when it peaks out. And I talked about it in September. We are near peaking out, and we are just completed 30-40%, 40% of the phase. So this is the time correction phase which will play out. So we are far away from the extreme where we say that भाई मतलब बड़ा buying का मौका. From at this level, maybe some stock specific level based on valuations and all, because you cannot paint everything with the same brush. Some selective things will be there. But when I'm saying कि अगर मुझे 100% small cap में invest करना है, no, this is not the time. Maybe 5-10-20% आज के मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसे मार्केट में भी जहां स्टॉक्स वैल्यूएशंस अच्छे मिल रहे हैं, ग्रोथ अच्छा मिल रहा है. Now let us understand about underperformance cycles of small cap. This is Sensex को कंपेयर किया है, निफ्टी को कंपेयर किया है सेंसेक्स से. कितने दिन का पेन होता है यूजुअली आप देखिए इन द लास्ट फेज व्हेन द स्मॉल कैप्स अंडर परफॉर्म द लार्ज कैप्स. 304 दिन मिनिमम लगा है उसको, स्मॉल कैप को फिर से आउट परफॉर्मेंस स्टेज में आने के लिए. 304 दिन. दिस इज वे बैक अर्लियर. इसके पहले फिर से 427 दिन. इसके पहले फिर से 1000 दिन. दिस इज फ्रॉम 2010 टू 13. फिर 800 दिन, 670 दिन. आज अगर हम बोले कि आज की स्टेज में मार्केट, इंडियन मार्केट्स और इंडियन इकोनॉमी इज मच बेटर देन अर्लियर, तो इसका हाफ तो पकड़ लीजिए. अगर इसका एवरेज अगर आता है 600 के तकरीबन, 600 के आसपास, तो मैं ये समझना चाहिए कि एटलीस्ट 300 दिन तक ये स्मॉल कैप अंडर परफॉर्मेंस रहेगा. तो ये शुरू हुआ है नवंबर में. तो नवंबर से 300 दिन मतलब तब तक हमें पेन है. और आई बीन टेलिंग, लॉट ऑफ पीपल से दैट इतना गिर गया और कितना गिर सकता है. नो, सी द स्टॉक विच हैज फॉलन, एंड इफ द स्टॉक इज ओवरवैल्यूड, जस्ट प्लीज रिमेंबर दिस, द स्मॉल कैप विल बी वर्स्ट हिट फॉर द स्टॉक फॉर वेयर देयर इज ओवर वैल्यूएशन. क्योंकि अंडरवैल्यूड है तो वो गिरेगा भी तो वो बाउंस बैक करेगा. दैट इज लाइक अ टेनिस बॉल. टेनिस बॉल की तरह वो बाउंस बैक कर सकता है. बट जिस स्टॉक में वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, वो एक बार गिरेगा तो फिर से रिकवर नहीं करेगा. उन स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूं जो स्टॉक ऑलरेडी 50% गिरा है, वहां से भी वो 50% और गिर सकता है. सो यहां वैल्यूएशन, तो ये 300 दिन का पेन. देयर इज नो नीड ऑफ हरी, बिकॉज 4 साल में अपने हर डिप में बाय करके पैसा बनाया है. बट प्लीज अवॉइड द डिप्स एज ऑफ नाउ, क्योंकि बेस फॉर्मेशन के लिए टाइम लगेगा. हर 4 इन्वेस्टर में से 3 इन्वेस्टर ने 2018, 18-19 जैसा स्मॉल कैप का बेयर रन देखा ही नहीं है. स्मॉल कैप बेयर रन 2018 टू 2019 आप देखिए जाके. एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, अ हाई क्वालिटी कंपनी, जो आज वहां से वो 25 या 30 गुना हो गई. द स्टॉक वेंट डाउन 80%. हाई क्वालिटी कंपनी. तो ये क्या होता है, पीपल गिव लेस इंपॉर्टेंस टू सेंटिमेंट्स. आज सेंटिमेंट स्मॉल कैप के कंप्लीटली उलट है. एंड मैं ये मतलब ये फियर क्रिएट करना नहीं चाहता, बट यू हैव टू बी वेरी श्योर. इवन इफ यू आर ओनिंग समथिंग, सम स्टॉक्स यू आर ओनिंग, इन सच केसेस यू हैव टू बी 100% श्योर कि वो बिजनेस क्या कर रहा है, उसके मार्जिन कैसे, उसके अगले 3 साल के रेवेन्यू क्या होने वाला है. दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट. एंड इवन टुडे आई एम होल्डिंग स्टॉक्स. इट इज जस्ट बिकॉज ये सब है, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो स्मॉल कैप में ही बनता है. मैं तो हेवीली जो स्मॉल कैप पे था वहां से कम आया, बट कुछ स्टॉक्स है आप बेच नहीं सकते हो.
बेचना नहीं चाहिए ऐसे स्टॉक से, एंड दैट इज आई एम होल्डिंग, आई विल टॉक अबाउट दैट एट अ लेटर स्टेज। वेयर अभी तो हमने देखा फ्रॉम अ प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू, नाउ लेट अस लुक एट फ्रॉम अ इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दिस इज द सोर्स DSP's नेत्रा which I have taken this the source for this data. Just see, Indian economy has seen a steady revival from the deep contraction during the pandemic. Growth has recovered to reach the 86th percentile rank compared to its history, indicating that economic rebound has gained momentum. High growth rates are not sustainable. Growth trajectory has returned to the normal average pace of 6 to 6.5%. Whether it is growth rate is sufficient or not is debatable. Whether India can grow faster or needs to grow faster is also debatable. Although the data on previous slide highlights how difficult it is to grow at a faster pace. हम 8% के ऊपर ग्रो नहीं कर सकते. That is the, and I'll show you the data. 8 to 8.5% हम we cannot grow beyond that. It is the true reality. We cannot grow like China. What the Chinese is a different animal altogether. We are a demographic country having 28 different states, having various languages. There are a lot of challenges with India. We cannot grow beyond 8% at any point of time. And this data says, so this is 3 year CAGR of 4-quarter rolling sum of real GDP. So from a percentile rank, whenever we reach this percentile rank, from that, once again, we fall down. So this is mean reversion. If you have not read about mean reversion, I have written a special blog. Go through that. कोई भी बंदा ज्यादा सुखी नहीं हो सकता है, कोई भी बंदा ज्यादा सॉरोफुल नहीं हो सकता. देयर आर साइकिल्स एंड मीन रिवर्जन इज इमीडिएट. तो ये साइकिल फिर से अभी डाउनवर्ड की तरफ आना शुरू हो गया है, एंड वी हैव नॉट इवन रीच दिस फेज, क्योंकि हर बार ये साइकिल के टॉप के बाद लो तो टच होता ही है. दिस इज जीडीपी ग्रोथ रेट का रोलिंग रिटर्न, रोलिंग ये है डेटा है. On that basis, we are yet to reach that pain. Pain is much higher in the economy. This data says growing at 8% isn't easy. This is from 1971 to till date. अब देखिए, जब भी हम थोड़ा 8% के ऊपर थोड़ा ग्रो किए, उसके बाद बहुत बड़ी गिरावट आई है जीडीपी ग्रोथ में. 1976 9.2% से ग्रो किए, उसके बाद वी ड्रॉप डाउन टू 1.7%. उसके बाद when we grew at 9.6%, फिर से उसके बाद गिर गए. 8.9% के बाद फिर से गिर गए. तो ये इकोनॉमिक साइकिल्स है. फ्रॉम 8% once again we fallen down to 3%. From 8% within few years we fallen down to this. Even today 9.7 तक ये, because this number is also debatable whether it is 9.7% or not, because today I feel honestly, when we reached 8.2% last year, it was not 8.2%, it was around 7%, because the way the GDP is calculated, that has been changed, that has got changed. Because of that, the number seems inflated. But इसको भी अगर हम ट्रू माने, this number from 8.2% this year, it is estimated that we'll grow at 6.4%. And कहां तक हम नीचे जाते हैं on a lower rate, we fall down to a place where it is 4%. 4%. Why? Because 4% is called as neo-Hindu growth rate. तो वहां तक हम गिर जाते हैं. तो there is a lot of room to this down cycle to be played out. And from an economic standpoint also, because for the stock market to grow, we need a strong economic standpoint. And at this point of time, we have just started slowing down. We have just started slowing down, so there is no hurry. So this is one more data point why one should not hurry. Even from a valuation perspective, ICICI Valuation Index, this is what I follow, works best for bulk investing decision. And I'm talking it for everything what we are discussing from the conviction point of view. And conviction कब आएगा? जब वैल्यूएशन सस्ते होंगे, तब बड़ा पैसा लगाए. छोटा पैसा एसआईपी करने के लिए इज नॉट मच डिफिकल्ट. एसआईपी तो आप कंटिन्यू कर सकते, बट बड़ा पैसा लगाने का आज टाइम है क्या? नहीं है. तो दिस टेल्स व्हेनेवर दिस नंबर गोज, तो आज की डेट में ऐसा है कि पूरा इंक्रीमेंटल पैसा आपका कॉन्जर्व होके लिक्विड में जाना चाहिए. दिस द टाइम. So because you will get better opportunities at a later stage, even if when I told earlier also from that angle. तो incremental जो भी पैसा है वो आप सेव कीजिए, because we will get better valuations.
तो we don't know whether we will get this zone like COVID or 2008. We don't know. But we can at least be here where we say we are comfortable to invest in equities and all for incremental capital. So this is the time is far. And one more point, why I say that the bad phase of small caps is not done yet is because of this data. And this data says that even after correction, अभी स्मॉल कैप का प्राइस टू बुक वैल्यू है 3.33 टाइम्स 3.33 टाइम्स इज द स्मॉल कैप का प्राइस टू बुक वैल्यू। और लास्ट टाइम जब हमने वीडियो बनाया था मार्च 2023 और जून 2022 एग्जैक्ट दिस इज व्हेन वी मेड द वीडियो, दिस इज व्हेन वी मेड द वीडियो ऑन स्मॉल कैप्स। तब हमने ये कहा था कि स्मॉल कैप इज द बेस्ट टाइम, बेस्ट प्लेस टू बी, बट नाउ द स्मॉल कैप इज नॉट द प्लेस टू बी बिकॉज इतने गिरने के बाद भी स्मॉल कैप सस्ते नहीं है। द वैल्यूएशन इज एट 3.33 टाइम्स। स्टॉक वाइज बहुत सारे स्टॉक इतने गिरने के बाद लगेगा कि भाई इतना गिरा और कितना गिरेगा, बट एक रिलीफ रैली आ सकती है, उसकी वजह से थोड़े बहुत स्टॉक फिर से ऊपर जा सकते हैं, बट वहां से फिर से उसको गिरना ही है। आइदर इसमें क्या अभी तक प्राइस करेक्शन हुआ है, टाइम करेक्शन के लिए क्या चाहिए, आइदर ये वैल्यूएशन सस्ता होने के लिए क्या चाहिए, एक तो बुक वैल्यू बढ़नी चाहिए। बुक वैल्यू कैसे बढ़ सकती है, तो मार्च एंड के रिजल्ट के बाद, मार्च एंड के रिजल्ट के बाद हमें ये पता चलेगा कि नई बुक वैल्यू क्या है। उसके हिसाब से अगर बुक वैल्यू बढ़ के आती है विच इज हाई पॉसिबिलिटी, तो ये प्राइस टू बुक नीचे आ जाएगा। तो एटलीस्ट मार्च एंड, और मार्च एंड खत्म होने के बाद उसका रिजल्ट जून एंड तक आता है, तो एटलीस्ट मिनिमम टाइम विच यू शुड वेट फॉर इज मई जून। मई जून में फिर से रीअसेस करेंगे कि भाई ये सस्ता हुआ है कि नहीं, क्योंकि प्राइस नहीं गिरेगा, शायद प्राइस नहीं गिरेगा बट वैल्यूएशन सस्ती हो जाए कंपनी के अर्निंग बढ़ने की वजह से। सो एटलीस्ट मई जून तक वेट करना चाहिए। दिस इज व्हाट द डॉट कनेक्टिंग सेज। वन मोर थिंग, अगर प्राइस वाइज देखा जाए, क्योंकि हमने वैल्यूएशन वाइज देखा कि वैल्यूएशन आज सस्ते नहीं है, और सस्ते कब हो सकते हैं, इधर प्राइस गिरना चाहिए या बुक वैल्यू बढ़नी चाहिए। बट फ्रॉम अ स्टॉक प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू और ओवरऑल इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू वेयर वी आर टुडे, अभी क्या हुआ है, लास्ट टाइम 2022 में जितना ओवरसोल्ड, ओवरसोल्ड डजंट मीन ओवर अंडर वैल्यूड, सॉरी, ओवरसोल्ड डजंट मीन अंडर वैल्यूड। ओवरसोल्ड में मतलब क्या है, कितना डिमांड सप्लाई का वो बताता है, स्टॉक्स का डिमांड सप्लाई के बारे में बताता है, इट डजंट टेल अबाउट द वैल्यूएशन। तो 2022 मार्च में हेवीली ओवरसोल्ड थे, बहुत लोगों ने बहुत बेचा था स्टॉक्स, और बहुत वीकनेस थी, फियर बहुत था। तो ओवरसोल्ड लेवल्स इज टेल्स यू अबाउट द फियर, एंड ओवरबॉट लेवल्स टेल्स यू अबाउट द ग्रीड। तो ये ग्रीड एंड फियर की साइकिल है। तो ये इतना फियर था, एंड एज वॉरेन बफेट सेज, buy when everyone is fearful and sell when everyone is greedy. So as simple as that. But ये इस डेटा को देख के आपको लगेगा कि buy when the fear is there. But I'll tell you, because 2022 में मई 2022, सॉरी जून 2022, मार्च 2023, उससे भी ज्यादा ओवरसोल्ड है, मतलब उससे भी ज्यादा आज फियर है। बट ऑन द अदर पॉइंट वैल्यूएशन सस्ते नहीं है। यहां क्या था, वैल्यूएशन सस्ते थे, तो फियर होने के बाद भी मैं बिक्स बाय कर लेता यहां। और इनफैक्ट वी मेड अ वीडियो, आपके लाइफ का सबसे बड़ा मौका होगा ये पैसा आप अगर नहीं लगा रहे, बोथ द टाइम्स वी सेड। बट दिस टाइम आई एम सेइंग अ बिट डिफरेंट, अ बिट डिफरेंट नहीं, लॉट डिफरेंट, बिकॉज यहां यहां ये ओवरसोल्ड लेवल देख के आप पैसा नहीं लगा सकते। उसका रीजन है ओवर वैल्यूएशन इन द इंडेक्स। बट क्या कर सकते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि ओवरसोल्ड है तो फिर से बाउंस बैक तो करेंगे स्टॉक्स। तो कौन से स्टॉक्स में लगाना चाहिए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आई टॉक सिलेक्टिव। तो यहां से अगर समझिए मैं गलत भी गया, क्योंकि महंगा और महंगा हो सकता है, दैट इज ऑल्सो माइट बी पॉसिबल कि भाई वो टाइम करेक्शन थोड़ी देर के लिए प्ले आउट, महंगा और महंगा भी हो सकता है। देर इज लो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट हैपनिंग एज ऑफ नाउ, बट वो हो सकता है। बट उस केस में भी आप कैसा पैसा बना सकते हो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी एट दिस स्टेज यू सी इंडेक्स 52 वीक हाई, 52 वीक लो, 52 वीक लो काउंट। पिछले 2-3 साल के हिस्ट्री में 52 वीक लो के नजदीक जो स्टॉक है ये सबसे हाईएस्ट गए। सो पेन इज देयर, देयर इज रियल पेन इन द मार्केट, फियर बहुत है।
तो कैसे बेनिफिट उठाना चाहिए मैं बता देता हूं आगे। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट नीड्स टू बी डन, जैसे मैंने पहले यहां कहा था मार्च 2022 में कि भाई आप गधे बाय करो, घोड़े बाय करो, आपका पैसा बनेगा। बट आज की डेट में इंडेक्स ओवरसोल्ड है, वैल्यूएशन सस्ते नहीं है, तो इस डेट में पैसा जाएगा कहां? क्योंकि इट इज वेरी क्लियर, स्मार्ट मनी मैनेजर्स बहुत बैठे हैं मार्केट में, दे आर ऑल्सो रीडिंग दिस सिचुएशन केयरफुली। उनको भी अभी ये समझ में आ गया है कि कंपेयर टू अर्लियर, क्योंकि तब गधे और घोड़े सब भाग रहे थे और सबको लग रहा था मैं जीनियस हूं, मेरे रिसर्च की वजह से पैसा बन रहा है। बट आज की डेट में क्या होगा? आज की डेट में ये होगा कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट विल हैपन लाइक द रियल हॉर्सेस ओनली कैन सर्वाइव इन दिस टाइम करेक्शन फेज, क्योंकि थोड़ा बहुत वो भी स्टॉक गिरेंगे, थोड़ा बहुत जैसे टाइम प्राइस करेक्शन अभी थोड़ा पेंडिंग है मैं बोल रहा हूं, सो उस टाइम में वो भी थोड़ा गिरेंगे। बट टाइम करेक्शन जब होगा, सबसे पेनफुल होता है टाइम करेक्शन। प्राइस करेक्शन तो आपको ठीक है मालूम है, बट स्टॉक गिर रहे करके, और थोड़ा बहुत आज भी टाइम करेक्शन हो रहा है, डेली डेली मार्केट मार रहा है सबको, इट इज किलिंग एवरीवन ऑन अ डेली बेसिस। बट वो प्राइस आपको दिख रहा है। बट टाइम करेक्शन में क्या होता है, इतना फ्रस्ट्रेटिंग एनवायरमेंट होता है कि लोगों को लगेगा भाई मैं मार्केट छोड़ के चला जाता हूं, आई डोंट वांट टू बी इन मार्केट्स, एंड वैसा सिचुएशन आने वाला है इन द स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स। तो वो उस टाइम पे अगर आपके पास घोड़े है, घोड़े स्टॉक्स, एंड आई विल टॉक अबाउट वन ऑफ द स्टॉक विच आई एम होल्डिंग, विच आई एम थिंकिंग इज अ डार्क हॉर्स एंड ब्राइट डार्क हॉर्स, एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट इस टाइम पे क्या करना चाहिए। क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही वीआईपी एक्सेस में आई हैड shared this, that that at this point of time it is good to do selective buying and deep value portfolio where we distribute. That is the best time to be, that is the best place to be. And at a later stage I'll be talking about that, why did I say so. At this point of time I said that election day panic is retesting again and there is a fear in the market. At this point of time you have to be very selective and only invest into those stocks where you have high confidence and circle of competence and you understand that business from core. Avoid borrowed ideas. आज की डेट में किसी ने टिप दिया उससे पैसा आपने बना लिया पहले, इसके पहले आज की डेट में इतना डेंजरस हो सकता है आपके लिए, यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कुछ भी वर्क नहीं करेगा। उस जिस बंदे ने आपको कुछ बताया होगा उसको भी क्लैरिटी नहीं होगा, तो आपको क्या बताएगा? नंबर वन। नंबर टू, उसको अगर पूरी तरीके से मालूम है, उसका कन्विक्शन आप कैसे लाओगे? यू कैन नॉट ब्रिंग। तो यहां आप वही स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए जिसपे आपका फुल स्टडी है और आपका फुल अंडरस्टैंडिंग है, और इवन आफ्टर इन द पैनिक, अगर पैनिक और बढ़ भी गया तो भी आपका कन्विक्शन नहीं हिलना चाहिए। सो दिस वाज द टाइम वेयर वी आर इन टुडे। तो ऐसे टाइम में कैसे स्टॉक बाय करना चाहिए, तो ये ऐसे स्टॉक्स मैंने जैसे बोला। अभी व्हाट आई एम बाइंग फ्रॉम दिस यू विल कम टू नो अबाउट what type of stock which you should buy. So one of the building products company is in my circle of competence. I've been understanding this business and sector from around past 7 to 10 years. I know what it takes to run a profitable building products company because it is a trading business and trading business is in my circle of competence. Now, one more thing is apart from that, as Charlie Munger says that if I know where I am going to die, I will never go there. And circle of competence is like a Lakshman Rekha in your investing journey. If you know where you are going to die, like if you cross that Lakshman Rekha, you are going to suffer. And I know that in this, what bad, even if it happens, I know how much bad it can be. So I am very clear about the business prospect and all those things. And more than that, circle of competence bhi chahiye. Second, please note it down. First thing, what you need to have is you need to understand the business from core. Second thing, the valuation should be heavily cheap compared to market, because इस market में आप फेयर भी बाय करेंगे ना तो भी आप सेफ नहीं है. यू हैव टू ओन समथिंग वेरी चीप, वेर इन इवन इफ दस, क्योंकि मार्केट गिर गया तो ये भी स्टॉक गिरेगा,
बट बाकी के स्टॉक रिकवर नहीं करेंगे, ये स्टॉक रिकवर करेगा। आज की डेट में हमें ये मालूम नहीं है, नाउ वी डोंट नो वेदर हाउ डेप्थ दिस पेन कैन हैपन। इन सच सिचुएशन यू नीड टू ओन टेनिस बॉल्स, the stocks which can bounce back, and you don't want to own eggs. After crashing, after falling, it can crash. So you need to own tennis balls. And I'm talking, if you want to own tennis balls, first you need to have circle of competence. Second, you need to have extremely cheap valuations. In this phase, you just understand this is a company with current market cap of 1,400 crore. Current market cap of the company is 1,400 crore. If you want to buy the entire company, you have to pay 1,400 crore. Now, this company is getting demerged because it has two units. One unit is marketplace business, just like hardware shops. They have multiple shops across India, and they are selling this building material products like cement, steel, rods, faucets, kitchenware items, many of the things, building material, all the building materials, each and everything they are selling. And there is one more unit into this company, which is manufacturing of steel tubes and all. So both these companies are there within this company of 1,400 crores. But what has happened to them is this manufacturing unit is giving them a return on capital employed of just 5-6%. And this marketplace business, the stores, I call it as DMart of building products. I call it as a DMart of building products. It is doing a return on capital employed of 29%. But both business combined, the return on capital employed and return on equity is getting fallen down to 15%, because of this bad business inside the good business, it is diluting the good things what is done by the building material segment. And because of that, it is not getting valuations on the street. And that is the reason why company has decided to demerge its two entities. One is hive off this demerger by doing this demerger from this manufacturing unit, and take ahead this building material segment and focus on it, because it is growing. Their management is saying that it can grow at 25% compounding for many years, which means 2x in 3 years revenues. Revenues I'm talking 2x in 3 years and 10x in 10 years. There is a possibility of revenue growth here. Here also revenue growth is there, but there are wafer thin margins. And what they are expecting is, after the demerger, focus on this. And currently the EBITDA margin is at 3%, and focus on aspirational 5% margins. 5% margins in this segment is huge. Just look at Home Depot in US and the amount of wealth that has created for its shareholders in US. Tremendous. And I think this is such a business which can, most of the things which we have here in India is repeated what has happened in US, and we have been growing similar. So this business, I own it in my daughter's account, and I want to own it for next 18 years. Not 18 years, she is 5 years old, 13 more years. She cannot sell unless she is 18 years. Also, and I don't hold it in my own personal account. I own it in my company account. Yes, yes. But this is what. So this, every business is like either a 1 year, 2 year story, 5 year story, or a 10-year story, or a decadal story. I feel this is a decadal story, and so that much confidence I'm having. So return on capital employed can go up from 15% currently to 29%. Key trigger for value unlocking is one of the competitor, which is Hela Market Infra, is coming with an IPO. You must have seen NSE के IPO के valuation की वजह से what has happened with Bombay Stock Exchange. The Bombay Stock Exchange, as the valuation for our national stock exchange keep on increasing, उसके हिसाब से the valuation for Bombay Stock Exchange also started expanding, and it went up 10x. 10x. I'm not marketing in a company, a particular company, Dikshit. So I'm trying to tell you, this much amount of confidence if you are having, then and then only you should invest in such stock at this point of time. So long-term sustain. So you need to find a stock wherein the write out three things.
Why I told you all this? Because every point is having such parameters. First of all, 2x at this point of time, what are the stocks which you should own? The stock which you, Mr. Durga Prajapati, I cannot name the stock as per the recent SEBI guidelines. So what are the stocks which you should own at this point of time? 2x sales growth in 3 years. In 3 years, if the company can grow its sales by 2x, that is the company which you should own. Margin expansion. So here you are seeing that there is a margin expansion possibility. So you need to see along with the sales growth, there should be a margin expansion, clear margin expansion possibility. Then point number 3 is stock should be trading at extremely low valuations. This company particular, along with that, I'm taking you this as a case study, one case study. I'm having 2-3 companies such. One more case study I'll be talking at a later stage. Someone who said that I'm marketing a particular company. No, I'll also talking about because this is a small cap company. I have taken one case from small cap, one case from mid cap also I'll be talking about at a later stage. So third thing is valuations. This is trading at COVID time valuations from a market cap to sales perspective. तो कोविड से आज तक कोविड के कंपैरिजन में सिमिलर वैल्यूएशंस हमें इस कंपनी में मिल रही है. तो वैल्यूएशन कंफर्ट. एंड फोर्थ इज ट्रिगर. तो ट्रिगर इसमें क्या है? वी फॉलो एफटीवीटी फ्रेमवर्क, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, वैल्यू एंड ट्रिगर. तो उसके हिसाब से ये सब आता है. ट्रिगर क्या है? इसको आगे आने वाला इंफ्राडॉट मार्केट का आईपीओ इसके लिए ट्रिगर है. तो उसकी वजह से आई एम बुलिश ऑन दिस बिजनेस एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ डीप वैल्यू पोर्टफोलियो विच वी distribute as decent weight, and that is the reason why I was discussing about this case. तो यहाँ क्या है? आप ब्लाइंड पैसा डाल के पैसा नहीं बना सकते. यहाँ सिलेक्टिव होना है. एक तो स्मॉल कैप बहुत कम रखिए, और जो रखा है ना वो भी ऐसी कंपनीज में रखिए जहां कॉन्फिडेंस व्हाट वी सी उतना कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन होना चाहिए उस बिजनेस पे. सो लेट अस मूव फॉरवर्ड. Now, hope you got the understanding what type of companies. आपको अगर स्मॉल, क्योंकि क्या है देखिए, we cannot paint everything with the same brush. When I am saying कि small cap is the worst place to be, but उसमें भी कुछ अच्छे होंगे ना, क्योंकि मैं पूरी तरीके से मैं स्मॉल कैप से बाहर जाऊंगा तो पैसा नहीं बनेगा. तो उस केस में ऐसी स्टेज पे जहां अनसर्टेनिटी हाई है और रिस्क कम है, ऐसे स्टॉक्स आपको ओन करनी चाहिए जहां कॉन्फिडेंस ज्यादा है. तो क्योंकि आज की डेट में, तब मार्च में मैं क्या बोल रहा था, मेरा 100 रुपए अगर है मेरे पास तो पूरा 100 रुपए मैं स्मॉल कैप में डालूंगा. आज की डेट में 100 रुपए अगर मेरे पास है तो मैं सिर्फ 20, 22, 25 रुपए डालूंगा या 30 रुपए डालूंगा. 30 रुपए स्मॉल कैप में डालूंगा आज की डेट में. और वो भी किस स्टॉक्स में? ऐसे स्टॉक्स में जहां कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस हाई है. सो दैट इज व्हाट that is what the situation is currently. So बल्क बाइंग के लिए टाइम आएगा, आप पेशेंटली वेट कीजिए, क्योंकि फॉर्चून क्रिएट होता है बल्क बाइंग से बेयर मार्केट में. और बेयर मार्केट तो अभी जस्ट शुरू हुआ है. बेयर मार्केट के फैग एंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका नसीब खुल जाता है, नसीब बन जाता है, फॉर्चून्स क्रिएट होती है. तो फॉर्चून क्रिएशन के लिए बल्क बाइंग इंपॉर्टेंट है, और बल्क बाइंग के लिए अभी टाइम है. सिलेक्टिव बाइंग अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन महंगा है और महंगे हो सकते हैं, वी कैन नॉट टेल. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं क्या बोल रहा हूं, रिस्क रिवॉर्ड आज फेवरेबल नहीं है. रिस्क रिवॉर्ड आज फेवरेबल नहीं है स्मॉल कैप्स में. कुछ स्टॉक्स में हेवीली फेवरेबल है. ऐसे स्टॉक्स आपको ओन करने चाहिए. प्रीशियस मेटल्स इन यूएसडी टर्म्स वर्सेस सेंसेक्स इन डॉलर टर्म्स कंपेयर कीजिए. ये कंपैरिजन है प्रीशियस मेटल्स डिवाइडेड बाय सेंसेक्स. Whenever the ratio is going up, and I talked about it on Twitter a few months back, that there is a big problem ahead in the markets. 4 months or 5 months back, I said that this ratio chart is telling me there is a trouble ahead in the market. How many of you read my tweet that I said that 5 months back I said, using this chart, precious metal versus Sensex, I said there is a big trouble ahead in the market. And we are going to see that trouble. How many of you saw that? Please comment in the comment box so that others can also understand who are thinking that
we are just another influencer. We are not just another influencer, because I believe the work which we are doing, very few people are doing. So other people can get a confirmation from this. So thank you everyone for the confirmation. So as of now, even now the data what it is saying कि peak capitulation अभी pending है. Just see, कोविड के पहले similar situation आया and lot of people say that कोविड के पहले कैसे किसी को पता चलेगा, बट इट वाज वी आई कमेंटेड इन द कम्युनिटी, बहुत छोटा था तब के टाइम में, बहुत कम लोग थे, बट आई वाज सेइंग दिस रिपीटेडली, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन बट देयर इज अ ट्रबल अहेड, और वो कोविड करके हिट हुआ. वो तब के टाइम में भी द रेशियो वाज टेलिंग यू इन एडवांस. इवन टुडे, आज की डेट में अभी पिक कैपिचुलेशन होना बाकी है, शायद 1 महीना हो या 2 महीना हो या 15 दिन हो, आई डोंट नो. एटलीस्ट टिल मार्च एंड the peak capitulation has to be played out. But remember, peak capitulation period is ahead and it is pending. So need to be highly selective, like the case which I talked about, building material company, which I like at this point of time. Now let us look at one more thing. So why one more thing? Why? See, I've been talking about from last year August that equity as an asset class is unfavorable. Equity as an asset class itself is unfavorable. That is what I have been saying from last year May. And even today, if I look at this, is Thomson Reuters commodity index divided by S&P 500. So when the ratio starts moving up, it means commodities gives better return than equities. And as of now, since past 3-4 months, gold, silver and all the commodities have given much more return than the equities. Even earlier, before into 2022 period, commodities gave better return than US market return. This is S&P 500, which means US stock market. I am talking about equity as an asset class. Indian market के हिसाब से भी मैं देखूं तो chart will look similar. So at this point of time, it has started, the commodities have started performing the equities, which means precious metals will do better, but gold is not at a, I'll talk about that at a later stage, what I feel about gold, क्योंकि gold के बारे में मैंने last year March में बोला था, gold will be one of the best performing asset class and it has given much more return than equities. But आज की डेट में gold नहीं है, it is a different commodity, I'll talk about that later. तो equity is at a अनफेवरेबल स्टेज. तो आज की डेट में डोंट बी बुलिश बिकॉज आपने बैड मार्केट नहीं देखा है. डोंट बी बुलिश अबाउट मार्केट, जस्ट स्टे. अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है, एसआईपी कंटिन्यू कीजिए, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम छोटा पैसा बनाना है, आपका कोई कैपिटल छोटा है तो इट डजंट रियली मैटर. बड़ा कैपिटल है, इट बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट टू बी पेशेंट. पेशेंस बिफोर इन्वेस्टिंग ऑल्सो इज मच मोर इंपॉर्टेंट. नाउ वन मोर थिंग व्हाट हैज हैपेंड is Thomson. This is called Thomson Reuters CRB Commodity Index, and what it contains, its constituents is 33% energy, crude oil, heating oil, and natural gas. 41% is agricultural commodities, corn, wheat, soybean, coffee, sugar, cocoa, cotton, and orange juice. 13% is industrial commodities, aluminum and copper. Precious metals is 7%, gold and silver, and livestock. So these are the constituents of Thomson Reuters commodity index. And the students, my students who understand this cup and handle, this is a cup and handle breakout. It is nearing a cup and handle breakout. And you know what happens after a cup and handle breakout? So there is a big run going ahead, possibility of a widespread commodity bull run, and it has been happening. Last year March I said we are in a commodity bull run. And this is where we were, and since then the commodity bull run has started. And I said that commodity bull run will be started by precious metals first, then it enters into industrial metals, then it enters into agri commodities. And it has exactly started happening that precious metals moved first, then it has entered into industrial. Copper देखिए, copper prices are nearing 52-week high. Aluminum prices देखिए, most of the industrial commodities are nearing 52-week high now. And other commodities from the past 2-3 weeks, other commodities have also started moving up. What it means, and I'm not sure about how it will play with crude oil, because I don't understand the crude oil economics. But natural gas, just see the way it has gone up.
तो commodities will do better. And usually जब commodity अच्छा करती है ना, equities take a step back. Equities take a step back, and there is a high possibility. And it has happened each earlier cycle. Now, one more thing, as I said that I don't understand crude oil economics, but when I don't understand the economy, how do I look at it? I look at it from a perspective that ये अगर price ऊपर की तरफ चला जाए, then it becomes a worry. तो ये it will add, ये जब तक क्रॉस नहीं होता तब तक इक्विटी मार्केट के लिए बहुत बड़ा वरी नहीं है. ये अगर कट कर देता है इसको ऊपर, तो इक्विटी मार्केट के लिए फिर से इट इज वन मोर बिग वरी. One more big worry, and it is also negative somewhat for gold mining companies. So that is the situation where we are in today. Now, in such case, what is the one more sweet spot? One more sweet. I will not be taking the questions during the session. Please post your question in the Q&A box. I'm not able to speak and I'm getting distracted. Please put your questions in the Q&A box. Now, Nifty Metal Index. At this point of time, one sweet spot which I said, at this point of time, own such businesses which you understand from the core. और small cap में कम पैसा रखिए. But at this point of time, small caps are most vulnerable. Mid caps are most vulnerable. That is the worst place to be. But somewhat what you can look at is Nifty Metal Index. But इसमें भी problem है. I'll talk about it at a later stage. Nifty Metal Index is at a breakout retest stage. इसका मतलब है उसका डाउनसाइड लगभग खत्म हो गया है, ऐसे लग रहा है अभी के टाइम में. और एंड देयर इज अ हाई चांस कि समझिए यहां से बुल रन अगर आता है, स्मॉल कैप तो टाइम करेक्शन में रह सकता है और मेटल अच्छा कर सकते हैं. देयर इज अ पॉसिबिलिटी. Other market segments can do well, but small cap can keep going down. That can happen. And it has happened in earlier cycles multiple times. Sweet spot कहाँ है? Sweet spot है metal man. I've been talking about this. थोड़ा डिले हो गया 2-3 महीने because of other सब मार्केट के साथ ये भी थोड़े स्टॉक गिर गए, बट वो फिर से फास्ट रिबाउंड कर रहे हैं. And Nifty Metal Index is at an inflection point. That is what I say. Even look at this chart. This is Nifty Metal Index डिवाइडेड बाय स्मॉल कैप. तो आप देखिए ये पिछले 2 महीने का डेटा, व्हाट इट इज सेइंग कि स्मॉल कैप स्टॉक्स गिर रहे हैं, बट मेटल स्टॉक गिर रहे हैं तो फास्ट रिकवर ऊपर करके आ रहे हैं. दे आर रिकवरिंग फास्ट. इनफैक्ट दे आर एट अ स्टेज वेयर दे कैन स्टार्ट अ रैली. तो मेटल स्टॉक्स आर प्लेस्ड मच बेटर देन द स्मॉल कैप्स. दिस इज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. बट माई वरी इज वंस अगेन, माई वरी इज, मुझे अगर किसी सेक्टर पे बहुत बुलिश होना है ना, मुझे वैल्यूएशन चाहिए सस्ते. I need extremely low valuations because equity as an asset class itself is unfavorable. So from that angle, even though Nifty Metal is looking good and rebounding and all those things, but although because ultimately they are stocks, they are equities. And equity as an asset class itself is unfavorable, I'm saying. So from that perspective, valuations fair है, expensive नहीं है. Small caps are extremely expensive. Metal are fair, but cheap नहीं है. Cheap, they are not cheap. Yes, you can say it is relatively cheap than 2008. This is 2008 का market fall. They were trading at 6 times book. Today it is trading at 2.39 times book. तो फेयर टू चीप की तरह एक्सट्रीमली अंडरवैल्यूड नहीं है. थोड़ा बहुत रिलेटिवली चीप बोलूंगा, बट नॉट एट माउथ वाटरिंग लेवल्स वेयर आई कैन गो गंग हो. तो इसका ये बोलता है, बिकॉज आई से दैट फंडामेंटल्स टेल्स यू व्हाट टू बाय, बट वैल्यूएशन टेल यू हाउ मच टू बाय. तो हाउ मच टू बाय में इसमें ये है कि like COVID, I said my 70% of my money was in metals. You all know. How many of you know? I said this. I took sessions and all my sessions was on metal stocks. My 70% of my capital was into metal during COVID. Please comment in the comment box. How many of, so that others can also understand and create a context to that. But today it is not comparatively that much cheaper. So from a valuation perspective, I cannot go gung ho on metals. Now, this is the problem. This is not a problem. This is a challenge. But how to solve that challenge? The next thing is there is one of the company
which is called as, which is a government steel producer. It is a company which is government steel producer, and this is the ratio chart versus Nifty, sorry, government steel producer company divided by Nifty. Government steel producer company divided by Nifty. Just see how nicely a government steel company is placed right now. So as of now, I am bullish on, if I want to bullish, I'm bullish on metals, but better, I am not getting valuation comfort in metal. But where I'm getting valuation comfort in metal, I am getting a valuation comfort in metal in one of the government integrated steel player. And this is the company which I am seeing. It has come down 70% from the top. And at this point of time, it is one third, trading at one third lower valuations, than metal sector. Because I'll tell you about the story about it, because this is in my circle of competence, and during COVID, I went very, very heavy. In fact, when I said that 70% of my capital was in metal stocks, more than 35% of my money was in a single stock. That is government's steel, integrated steel player. Let me tell you few facts about that government company, integrated steel manufacturer. The replacement cost of that company is 1,36,000 as on today. Not even 1,36,000. It has moved up to 1,40,000 crores as on today's valuations. That is replacement cost, which means if I want to set up a similar plant, it will take 1.4 lakh crores. But that company is available at a valuation of 44,000 crores. 44,000 crores. That is from a replacement cost method. I'll give you one more method by which the valuation can be arrived. And the credit for the entire work which I'm presenting to you right now, the credits goes to Mr. Apurva Sharma, who is the owner of RAS Capital, who is the founder of RAS Capital. And he did that study when we were discussing about this case. He did this entire study. What he has taken, the assumption, the CAGR sales growth, he has taken just 6%, which is much lower than the historical numbers, or closer to historical numbers. So for next 10 years, he has expected that the sales growth will be happening 6%. Target operating profit, he has taken 12%, which is okayish. So from that whole angle, current market cap of the company is 43,000 crore, and terminal growth he has taken 7%. From all these assumptions, cumulative value of present value of future cash flows is 282 rupees per share. Shareholder value per share is around 281 rupees. Currently, it is trading at 110 rupees. Just see the level of undervaluation which it has. From a replacement cost method also, cost to set up that plant is 1,40,000 crore, and you are getting that plant at 40,000 crore, 42,000 crore. So it is, other steel plants are trading at 80% of the replacement cost. This is trading at less than 50% of the replacement cost. Actually, it is trading at how much? I think 35% of the replacement cost, and others are trading at 80% of the replacement cost. So the undervaluation is huge in this company. That is what I think. So, and why I'm interested in this, because I'm interested into Nifty Metal, which is looking very attractive. Maybe because of commodity bull run, if the recession or something doesn't happen before that, the commodity stock, and especially the stock which is the most undervalued, can gain maximum. And from that angle, I have first found the sweet spot, but because valuations are not comfortable from that index, I found a stock from the same sector, which is the cheapest stock. So in that way, what I'll ensure is, if there is a bear market, let us say, because small cap may worry hai, and this is a mid cap company, and that too a metal company, even if the market fall happens, I'm least worried, because जो सस्ता है और सस्ता हो जाएगा, मैं नीचे जाके जब रिवर्सल पे और ज्यादा बाय कर सकूंगा. आई डोंट हैव टू वरी अबाउट परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल. बट यहां से बुल मार्केट चल जाता है, बिकॉज इफ द बेयर मार्केट डजंट हैपन,
bear market doesn't happen, if bull market happens, which is low probability, still I'll be making sure that we will be making money. So this is the situation. Now let us look at other also. In 5 minutes, I'll cover other points. I talked about gold mining. I said that gold mining is can save you from the downside, and it saved from the downside. I said that cut down the small caps in September, and I had told gold mining you start increasing, and gold mining has done phenomenally well. It is up 50%, and still the steam is left. So one can keep on continuing their gold mining, because as the recession fear sets in, बिकॉज अभी तक यूएस में होना चाहिए था, बट फियर है, जैसे जैसे फियर बढ़ता जाएगा, गोल्ड माइनिंग विल डू मच बेटर. गोल्ड माइनिंग विल डू मच बेटर. नाउ लेट अस मूव अहेड. वन मोर थिंग, बट गोल्ड आज की डेट में, बिकॉज लास्ट ईयर इट वाज वेरी गुड, गोल्ड वाज वेरी गुड टू एज एन इन्वेस्टमेंट, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम गोल्ड हैज रन अप अ लॉट. कुछ एक्सीडेंट होता है ना, तो गोल्ड कैन गेट हिट. बट सिल्वर इज लुकिंग वेरी गुड टू मी, बिकॉज सिल्वर यूजुअली बुल रन में क्या होता है, सिल्वर गोल्ड से ज्यादा बढ़ता है. सिल्वर मूव्स मच हायर देन द गोल्ड, एंड इट हैज नॉट हैपेंड येट, एंड सिल्वर कैन डू मच बेटर. सो आई एम वेरी कंफर्टेबल फॉर सिल्वर एज अ इन्वेस्टमेंट टुडे. सिल्वर रेशियो इज एट ऑल टाइम लो. Even I told about China. China is, I said that cut down India a bit, and if you want to cut down big also, it is okay. Invest in China, and China has been doing very well. The stimulus and money printing has started. It has just started. Just see this. The amount of money that is getting printed in China is huge, and this has just started. For next few months, it will continue. So China will do very good, even from this point. And but the ETFs which are available in China right now are trading at much premium valuation. So if you want to invest, you can connect with the team. We can mitigate that risk also. Along with that, Hang Seng Tech Index. I told about Hang Seng Tech Index. Maybe what is the profit booking time? Partial profit booking time will come in the Hang Seng Tech Index, because we have been bullish on it. We are sitting at magnificent gains around 40-45%. यहाँ से 20% और बढ़ने के बाद we will think about partial profit booking. Now let us move ahead. But इसके बाद क्या देखना है? ये bear market खत्म होने के बाद, when it will end, maybe the new bull market might be starting 6 months, 8 months, or 10 months down the line from in small caps. For our overall broad market, for metals it might be in a bull run, but broader bull run, मतलब जो भी हाथ लगाओ वो सोना बनेगा, ऐसा टाइम जब आएगा, आगे जाने के आने वाला है. तो उसके लिए ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डॉलर इंडेक्स का डेटा है, एंड डॉलर इंडेक्स इज अ फेज वेयर डी डॉलराइजेशन इज हैपनिंग. और डी डॉलराइजेशन अगर हो रहा है, तो इमर्जिंग मार्केट्स बहुत अच्छा करते हैं. तो इंडियन मार्केट्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर दैट, व्हेन वी गेट दैट परफेक्ट टाइम, इंडियन मार्केट्स विल डू मच. It will be like a tsunami of wealth creation. That is to be sure. You cannot be bearish on India. इंडिया में बहुत पैसा बनने वाला है. टाइमिंग आज अच्छा नहीं है. अभी थोड़ा कॉशियस होकर प्रॉपर पैसा बचाना है और प्रॉपर उसको एलोकेट करना है, क्योंकि बहुत बड़ा बुल रन, बिग बुल रन, whenever it happens, you will be benefit out of that. So wait for that time. Wait for that time, and the time will come. Now coming back to the conclusion, small caps are highly oversold. More oversold than June 2022 and March 2023. Such type of situation has happened for the first time after COVID. However, even after the median fall of 30%, index is overvalued. There is no margin of safety in the index itself, small cap as an index as a whole. But because index is highly overvalued, and because the index is highly oversold, वैल्यूएशन महंगे, बट स्टॉक फियर बहुत है, उसकी वजह से एक रिलीफ रैली आ सकती है. बट डोंट कंसीडर इट एज अ बुल रन इन स्मॉल कैप्स. वो रिलीफ रैली यूज कीजिए. अगर आपने कट नहीं किया है तो उसको कट करने में यूज कीजिए, बट दिस इज नॉट द स्टार्ट ऑफ अ बुल रन इन स्मॉल कैप्स. टाइम करेक्शन इज पेंडिंग. फ्रॉम अ इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट, slowdown has just started, and we can see much more pain before economy bottoms out. During such time, it says that only invest in the high confidence, high circle of competence, high understanding of stocks, like what I said about one of the integrated steel company.
ए टू जेड, वो बिजनेस के ओनर को, प्रोमोटर को जितना मालूम है उतना ही आपको बिजनेस मालूम होना चाहिए। देन आई से इट इज एज अ सर्कल ऑफ कमेंट। ऐसे ही स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना है जिसमें वैल्यूएशन चीप है। और मेरे केस में दो केस है आज की डेट में। वन ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल मार्केट प्लेस बिजनेस, एंड सेकेंड इज गवर्नमेंट इंटीग्रेटेड स्टील मैन्युफैक्चरर फॉर द केस विच आई हैव टोल्ड टू यू। Gold is now trading at uncharted territory. Good to continue SIPs, but the valuation, the comfort is not there for bulk purchases. अगर परचेस भी करना है आपको तो पैसा लिक्विड में डालिए और वहां से एसटीपी कीजिए गोल्ड में। बट सिल्वर इज सच अ प्लेस, 100 रुपए में से 50 रुपए में लमसम अभी लगा सकता हूं और 50 रुपए एसटीपी के थ्रू में लगा सकता हूं। Has lagged big time in this precious metal bull run. Comfort lies in silver than gold. So silver is much more cheaper than gold at this stage. Same goes with silver miners. Silver miners have also done nothing. गोल्ड माइनर्स हैव शोन रिकॉर्ड प्रॉफिट्स, बट आज की डेट में आप पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते क्योंकि वो फंड बंद हो चुका है। बट आप अगर ओन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर अर्लियर वीडियोस, कीप ऑन होल्डिंग दैट, बिकॉज जैसे ही रिसेशन फियर्स बढ़ेंगे वो बहुत अच्छा करेगा। दे शुड नाउ स्टार्ट गेटिंग नोटिस बाय लार्ज पार्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। वैल्यूएशन गैप बिटवीन गोल्ड प्राइस एंड गोल्ड माइनर्स इज ह्यूज। तो बड़ा पैसा अभी भी बनना बाकी है। अभी तक जो हमने गोल्ड माइनिंग में देखा है दैट इज जस्ट अ ट्रेलर, पिक्चर तो अभी बहुत आगे बाकी है। सो मीन रिवर्जन शुड प्ले आउट। निफ्टी मेटल इंडेक्स इज ट्रेडिंग एट अ इन्फ्लेक्शन पॉइंट। वैल्यूएशंस आर नॉट cheap but fair. One of the integrated steel manufacturer which I am liking is heavily undervalued compared to index. Valuation comfort lies there. In such situations, it makes sense to own undervalued such metal stocks which gives holding comfort and low chance of permanent loss of capital. आज की डेट में आपको अगर पार्टिसिपेट भी करना है ना, क्योंकि we cannot say that just because market ये है तो बाहर नहीं रह सकते। You cannot paint everything with the same brush. ऐसी डेट में, ऐसे टाइम पे जहां आपको मालूम है अनसर्टेनिटी बहुत बड़ी है, तो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए जहां रिस्क कम है, अनसर्टेनिटी बड़ी है। क्योंकि यार रिस्क बहुत कम है, अगर वो नीचे भी चला जाएगा तो बहुत फास्ट टेनिस बॉल की तरह ऊपर आएगा। तो ओन सच स्टॉक्स। 7400 के ऊपर क्रूड ऑयल जब चला जाता है, इट कैन बी रिस्क टू इक्विटीज, दैट शुड बी टेकन इन द माइंड। इंक्रीमेंटली जितना भी एक्स्ट्रा आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में चेंजेस करिए आप। ज्यादा अंडरवैल्यूड कंपनीज की तरफ जाइए, स्मॉल कैप कट कीजिए, ऑल दिस थिंग वी कैन डू, बट फ्रेश पैसा मार्केट में मत डालिए प्लीज। अगर डालना भी है तो ऐसे ऐसे स्टॉक्स जो आपके स्टडी में वैसे उसमें 100% डाल सकते हैं, बट बी लाइट एंड कंजर्व द कैश। अगर बड़ा पैसा बनाना है तो, बड़ा पैसा बनाना है तो पेशेंस रखिए, अच्छा टाइम आएगा और अच्छे टाइम के लिए राइट टाइमिंग में बड़ा पैसा डालिए। छोटा एसआईपी वगैरह कंटिन्यू कर सकते हैं। लेट द टाइम करेक्शन प्ले आउट इन स्मॉल कैप्स एंड दैट होल्ड्स ट्रू मोर फॉर द स्मॉल कैप्स। Selectively, one can be heavy on circle of competence where valuation is extremely cheap, growth is clearly visible, and the revenues can double in 3 years. So this was my key takeaway from this entire presentation which we had. Now, if you want to invest safely in the current environment, what we are suggesting is we have a deep value portfolio which you can subscribe to. आज की डेट में it was earlier it was 95, more than 85% into small caps. We have cut down the small caps from 85% to 24%. That too, these are all deep value small caps. क्योंकि as I said that you cannot paint everything with the same brush. So we have cut down from 85 to 24%, and all these are deep value tennis balls which can bounce back. That is stage number. This is the case. Second case is Chinese equities. 11% of the portfolio is invested into China. तो चाइना तो नहीं गिर रहा है ना, चाइना इज इनफैक्ट डूइंग बेटर। देन मेटल स्टॉक्स 12%, एज आई टोल्ड अबाउट द केस ऑफ मेटल स्टॉक्स, 12% इज इन मेटल स्टॉक, दैट टू इन हेवीली अंडरवैल्यूड स्टॉक्स। 8% is into PSU bank ETF, and PSU bank ETF is not a small cap, it is a large cap, because small cap में worry है, worry is not in other large caps and all. 7% is into building material products business, and it might get increased also. 38% लिक्विड है, तो आप देखिए 38% प्लस 11%, क्योंकि इसको मैं लिक्विड ही मानता हूं क्योंकि वो गिर नहीं रहा है, इनफैक्ट इट विल डू मच बेटर। तो अराउंड 50% आपका ऐसा पैसा है वो गिरने नहीं वाला है। तो
तो आज की डेट में व्हाट इज द स्ट्रेटेजी? टुडे द स्ट्रेटेजी इज, if you have 100 rupees to invest 30 rupees as of now and 70 rupees, I'm talking about fresh capital, fresh, बड़ा पैसा आपके पास है, कैपिटल है, तो 30 रुपीज इन्वेस्ट कीजिए, यहां से स्टार्ट कीजिए, बिकॉज नो बडी कैन प्रिडिक्ट एवरीथिंग, नो बडी कैन गेट द टॉप एंड बॉटम, एंड दिस, ऐसे हमने रिस्क प्रॉपर मैनेज किया इसमें, एंड रेस्ट 70% कैन, वी कैन वेट एंड वेट, क्योंकि इसमें से 30% भी 15% ही इन्वेस्ट हो रहा है तकरीबन इंडियन स्टॉक्स में, और बाकी का तकरीबन 50% इज इनटू स्टॉक्स वेयर दे आर नॉट फॉलोइंग, और इनटू सच पोजीशन वेयर दे आर, क्योंकि लिक्विड है, 38% तो लिक्विड है, ये भी जब भी मौका मिलेगा वो भी डिप्लॉय किया जाएगा। आउट ऑफ 30 रुपीज 15 रुपीज इज सेफ अगेन। तो आप समझिए हाउ सेफ वी आर गोइंग नाउ, एंड जब भी मौका चेंज होगा, जब भी लगेगा, वी कैन रियलाइन इट अकॉर्डिंगली। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज प्रेजेंटेशन।